Okay. Right. So, very good evening to you all. I am Jaya Jairam from Mohan Foundation, a 26-year-old NGO that has been promoting organ donation in India. Now we are, I'd like to welcome you to the next in the Meet the Warrior series. What happened, Srividya? I am Jaya Jairam. I'm hearing my own echo. Yes. All right. So we welcome you to the next of the Meet the Warrior series. We've been striving to bring you some remarkable individuals in this series. And these initiatives are brought to you by our patient support group called Triumph. Triumph stands for Transplant Recipients of India and Organ Failure Patients, a movement to provide hope. Triumph is an initiative of Mohan Foundation, and we are thankful to SBI Foundation for supporting these initiatives of ours. It gives me great pleasure to share with you that today's webinar is in collaboration with Chaya Kidney Foundation, which is led by my co-host for the day, Kishore Suryavanshi. Hi, Kishore. You're muted. No, you're still muted, Kishore. Can you unmute yourself? Okay, till he unmutes himself, I will introduce Kishore to you. My dear friend, Kishore Suryavanshi is a kidney recipient of 16 years himself and has won laurels in National Transplant Games. And he has had the honor of representing India in World Transplant Games for the last consecutive 2 years. This is what he does when he is not impressing the ladies with his beautiful singing and his guitar. He leads Chaya Kidney Foundation that he has named after his sister, who is also his kidney donor. Over to you, Kishore. Yes, thank you, Jaya. पता नहीं उस तारीफ के काबिल हूँ नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो टॉपिक है, ये काफी सारे लोगों के लिए मोटिवेशन रहने वाला है, क्योंकि आमतौर लोगों का एक नजरिया होता है कि यार ट्रांसप्लांट हुआ तो मतलब 2-4 साल में विकेट गिरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज अपने साथ जो गेस्ट है डॉक्टर शुभा और प्रसन्न जी, तो ये ऐसे खिलाड़ी है इस खेल के जिन्होंने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के 20 साल से ज्यादा वो पारी खेल चुके हैं, और मैं दुआ करूंगा कि और आगे भी वो खेलते रहे। तो 20 साल यानी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है इस केस में देखा जाए तो आज बड़ी खुशी होगी। इन दोनों से हम जानेंगे इनके क्या सीक्रेट्स है, क्या टिप्स वो देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली लेडीज फर्स्ट, तो डॉक्टर शुभा से। बट पहले सॉरी, उससे पहले मैं जिनकी वजह से आज ये सब प्रोग्राम या ये वेबिनार होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जया मैम मोहन फाउंडेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर मुंबई में, और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को 13 साल हो चुके हैं, और ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काफी बड़ा काम वो करते हैं, आप जैसे आप सभी जानते ही है, और काफी सारे लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो उनका बहुत लंबा लिस्ट है परिचय देने का, लेकिन आज बस हम थैंक यू अपने जो गेस्ट है तो उनसे हम जानने के लिए बड़े उत्सुक है। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा शुभा मैम से कि आपकी जो जर्नी है, मतलब कहाँ से आप वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, और अब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद का वो सफर के बारे में कुछ बताइए। Shubha, you have to unmute yourself, please. Yeah, thank you, Jaya, for inviting me here. Thank you, Kishore, for the introduction. And yes, I'll start with my story. So my story is, it started at when I was 33 years old. I was married. I had a 2.5, 3-year-old child, and I was working 9 to 5 in Ahmedabad as a pathologist in a 250-bedded hospital called Rajasthan Hospital. That time it was 250-bedded. I think it has grown over the years, and this was in 2001. So we had shifted in 2000 to Ahmedabad from Hyderabad because my husband was transferred to that. My husband had taken up a job there in Ahmedabad. So
I was working there, so and my husband was also was working in Gandhinagar, and everything was fine. We had lots of dreams. We had just started our journey, and we had a lot of responsibilities. And we thought, "Chalo, we this is the time for us to work hard for our daughters, for our future, for a house, for a family." And everything. And then one fine day, I suddenly developed, early in the morning at 4 o'clock, I suddenly developed severe vomiting. Mind you, I was not having, मुझे कोई hypertension नहीं था, diabetes नहीं था, I had a normal delivery. My daughter was 2.5, 3 years old, and suddenly I developed severe pain in abdomen and vomitings. And then I was taken to the hospital. When I was taken to the hospital, it was detected that I had gallstones, and one of the gallstone had stuck into my ampulla of water. That is what, this is all technical terms, but in nutshell, I had what is called as pancreatitis, secondary to gallstones. Now, this is, I don't want to frighten my audience here. This is a very rare phenomena that only, because gallstone सभी का होता है, बहुत सारे जनों के होते हैं, सबको ये प्रॉब्लम नहीं होता है. This is a very very rare phenomena. It only happens if your gallstones are very small. Okay, so I had a large, small, mixed type of gallstones, and one of them had gone and stuck, and I developed pancreatitis. So after that, for about 2 weeks, I was not. I was asked to be in the hospital, what we call it NBM, that is nil by mouth. There was nothing given to me, and after that, when the tests were done, my serum creatinine was a little high, and this was in 2001. And since then I had contacted Dr. Trivedi in Ahmedabad. So they said that this is okay, 10 to 1.6, 1.7 is fine. You don't, you be careful. And now I'm talking about 2003. There were no cell phones, there was no social media, there was no support group, there was no counseling, there were no nutritionist. So, and going to the doctor, taking an appointment was a very big hurdle. And even though I was a doctor, for me it was, because I was very new to that plate, it was hardly 1.5 years since I was there in that place. It was very difficult for me to navigate everything and get hold of Dr. Trivedi. So somehow I could manage to get him. And then I started getting in touch with Dr. Mani. And as I said, there was no cell phones and all. So he had asked me to send faxes. So I was working in a lab, so I used to do my tests very regularly. And whatever the doctor told, we didn't have a nutritionist. So whatever the doctor told, and I also would read up a lot about all these things, and I would take my diet accordingly. But somehow the creatinine started um, rising. And then I was constantly in touch with Dr. Mani through fax. So whatever he would tell me on fax, I would follow. And then in 2003, it started rising very fast. And October 2003 is when Dr. Bani said, you just fly down to Chennai immediately. Because I used to get my test done in my lab in Rajasthan Hospital, which was one of the big hospitals there at that time. And so he said, I'd like to get all your tests done here in Chennai, in Apollo. Come over to Chennai. So both of us flew to Apollo, and we had a 3-year-old daughter. We kept it with our neighbors, and we flew down to Chennai. And when we went there, he had a look and he said, immediately, I would like, did all the tests, and he said, we want to get your kidney biopsy done and get an AV fistula done immediately. And then now I was the only doctor in my family on both the sides. So the decision making as to where to get my transplant done, who my doctor is going to be, how am I going to deal with all these things was entirely on me. I was very independent, of course, extremely independent. I took all the decision myself with my husband on my side. And we went then, but my teachers were very helpful. Some of the teachers in Hyderabad were very helpful. So they suggested the nephrologist, Dr. JCM Shastri, and who was at that time attached to Kamineni Hospital.
So they suggested, why don't you come out to Hyderabad if that is the case? Because in Chennai I had relatives, but most of them were in Hyderabad. So Hyderabad would have been more convenient. So we opted for Hyderabad. So we again flew down to Hyderabad and got in touch with Shastri sir, and he suggested a preemptive transplant and said, who look out for a donor. And my mother was immediately self-motivated, without a second thought, was ready, and all the tests were getting done. So till now it was all very smooth. Diagnosis smooth in the sense the donor, the tests, everything was going. There were no hurdles here, except for the fact that my creatinine was very high and I needed a transplant within 2 years. Now, as we were getting a test done, my apprehension started, because this was not something very common, and transplant was something which we had not read in our medical curriculum in those days. And I did not know many. We had heard about transplant, but personally, I did not know anybody. Then, so I started getting very apprehensive. So I had to talk to Dr. Shastri. So I went and said, I'm very apprehensive. I don't know whether, I don't know what to do about it. So he sat me down and he showed me, he just talked about a few statistics he gave me. So and so is there, so and so in 5 years, so and so is 10 years. And I very vividly remember him mentioning there is a person in Rajasthan who got operated in late 70s. So he's still alive. I'm sure he's still alive. I'm not very sure, but I heard that he's still alive. I So think this was Kishan Ram, Sharma. yeah, because Okay. when I read in Triumph about him and that he has the same, Dr. JCM Shastri was his Yeah. nephrologist. So then my apprehension eased a little bit, because I didn't know any study about how many years the kidney transplant people survived. So then I So, asked sorry to interrupt you, Shubha, but yeah, this is the yeah, yeah, biggest fear in people's minds, that yeah, yeah. how long Are will you it going to? take? How long will this survive? And that Yeah, is precisely इसीलिए हमने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि yes. लोगों को एक हिम्मत मिले, कि पता चले कि there are people like you, like Prasanna Kumar ji, who are doing well after, I mean, 20 is a milestone. So Yeah, of course. And to tell you very frankly, I never thought I would come so far. Okay. So, and not only that, he also said that, and then I said, what is the possibility that I will die by a transplant? I had mentioned this in Triumph also once. So that he said, the possibility of dying nowadays in a road accident is much more than dying through a transplant. wow. So that was the statement. I still remember his statements. So when So did you have the transplant, 2000, Shubha? October 2003 in Hyderabad. I had it in Hyderabad. And that's it. That is my journey. It was a very short 2001 to 2003. That's a very short journey. Initially, it was very, very, and going through, sitting in my lab, and my technicians used to, they would stand outside the door, telling ma'am that, your creatinine has raised. They would feel uncomfortable. They would not tell me till the last moment. Then I was tell, हाँ हो रहा है madam, test हो रहा है madam. They will do it, double check it, triple check it, and it would always be raised. It would always be raised. So that was how it was. So anyway, Thank you for sharing your story with yeah, us. that's scary. Sorry, yeah. Why am I hearing my own echo? I don't. Okay. So Doctor, that thank was you. how it was. Sorry. Yeah. Thank you so much for sharing Yeah, your yeah, story with us. Shubha, we have a lot more questions. So the next question from me would be, um, how has your overall health? So it's been what, 2003. So it's been exactly 20 years then. yeah. 20 Yeah. years, around 4 months. Yeah, Congratulations, yeah, first yeah. of all. 3 months, 3 months. 3 months. Yeah. Yeah, So, how has your overall health been since the kidney transplant? Because we want to focus on these aspects. yeah, Essentially, yeah, इस yeah. वेबिनार के जरिए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट क्या क्या challenges है उसमें क्या क्या है. So we would like you to share that also, Shubha. So, see, I would like to frame this into, first 9 years, second 9 years, or first 10 years, second 10 years.
because usually, in the first 6 months of our transplant, we are very careful. So usually mine was uneventful, except for one particular challenge I had. After 2 months, I had cyclosporin toxicity. So this immediately shifted it to Siromys. I'm not sure whether tacrolimus was in the market, or even if it was in the market, I think it was new. It was a new drug. So Sir must have thought that tried and tested. He gave me Siromys. So I was put on Siromys. Apart from that, I think I had diarrhea once. Once I had a severe cold, which lasted for about 10 days, which I don't think is very transplant. It is transplant independent, is what I feel. I mean, I I mean, this don't. can happen to anybody. Yes, I don't want to relate it to transplant. So for about 9, 10 years, I was quite uneventful, nothing. I was doing a job. See, my job was off and on. We'll talk about the career. You must have be having a question about the career also. Yeah, that I'll come to. So we'll come Yeah, to so that. I'll talk about that then. But I was doing my job on and off, and I was looking after my daughter. I was looking after my house. My husband's job was always very. I mean, it was a long working hours. We always had long working hours. So most of the responsibility was I was completely responsible for my house. I was very independent, and that's it. That's it. So we managed it very well for the first 9 years. Then after in 2012, so it's around after 9 years, I had a I had to undergo a surgery. That is, my ovaries had to be removed because they had enlarged. So I underwent a surgical menopause. That was one incident. And after that, my journey was a little bit of a roller coaster ride because I had repeated urinary tract infections. And that lasted till 2018. So 2012 immediately after my surgery, I had a urinary tract infection, and that relapsed. Maybe it relapsed, maybe a new infection. I'm not very sure. So menopausal woman, female menopause, and all. I already started. I would just became a diabetic. So diabetes. These three things are very. I was very prone for urinary tract infection, and I did get urinary tract infection, in spite of all the precaution I was taking. So that was it. And after 2018, again, it's fairly okay. It's Except settled then. I had COVID. It was not COVID. It was I did not test positive for COVID, but all the symptoms were absolutely similar to COVID. I was hospitalized. I was on oxygen, and but everything was fine. So I'm back. Truly a warrior. Okay, no. Yeah, yeah. But I think we should hear from Mr. Yes. Hassan also. Yes. So Yeah, I will now hand it. Thank you for sharing, Shubha. We'll come back to you with more questions. yeah, sure, sure. Over to you, Kishore. Do you want to ask the next one to Prasanna? You're muted, Kishore. हेलो Yeah. हाँ प्रसन्न सर से मैं पहले भी मतलब मिल भी चुका हूँ 2 बार और उनसे रूबरू भी मतलब बुक के सिलसिले में उनसे जब मुलाकात हुई थी तो एक टॉपिक पे मैं स्टक हो गया था कि आमतौर पे देखा जाए तो लोगों को डोनर जल्दी मिलते नहीं है बट प्रसन्न जी के घर में मतलब उनके रिलेटिव्स और वो सब मिला के उनको लगभग 25 से 30 डोनर्स उनको किडनी देने के लिए तैयार थे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बात मेरे अभी जहन में आई कि वो सवाल भी हम पूछेंगे उनसे पर उससे पहले मैं बाकी लोगों के लिए मैं प्रसन्न जी से सवाल करना चाहूंगा कि सर आपका जो जर्नी रहा मतलब किडनी फेल्यूर से लेकर बाद में फिर वैसे आप तो एक कैरेक्टर जो है आपके नाम में ही प्रसन्नता है तो आप रियल में भी वैसे ही हो मैं जानता हूँ मिला हूँ आपसे लेकिन बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा कि सर बहुत प्रसन्न रहते हैं हमेशा लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी बीमारी होती है कि किडनी डिजीज जो कोलैप्स कर देती है इंसान को देखा जाए तो लेकिन उसको ओवर कम करके आगे बढ़े तो सर आपकी जर्नी जानने के लिए काफी सारे लोग अभी उत्सुक है सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बताइए
1990 में मुझे मलेरिया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं, वो मुझे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, इतने बड़े कि 98 में मुझे पता चला कि मुझे जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे वो सारे किडनी फेलियर की वजह से हो रहे। तब तक मुझे पता ही नहीं था 8 साल तक कि मुझे मेरा किडनी पे डैमेज है या किडनी फेल है। अभी तब जब तक नहीं पता था तब तक मुझे बहुत टेंशन रहता था। जिस दिन पता चला कि मेरी किडनी फेल है तो मैंने कहा अभी शुरू करें खेल। किडनी फेल तो करे शुरू करें। बस वहां से खेल शुरू किया और तय कर लिया कि इस दिन को मैं मेरे हेल्थ को रिस्टोर कर लूंगा। मतलब जिस दिन मुझे पता चला 7 मार्च 1998, 7 मार्च 98, जिस दिन मुझे ये पता चला कि आई एम पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर, उसी दिन मैंने तारीख तय कर ली थी कि इस तारीख को मुझे रिकॉल हेल्थ को रिस्टोर करना है। तो उसके बीच में क्या करना था कुछ भी नहीं मालूम था, फिर भी सारा हो गया। तो इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ी मुझे। डायलिसिस मेरे 8 हुए सिर्फ, उसमें से 5 हीमोडायलिसिस हुए, 3 पेरिटोनियल डायलिसिस हुए। उस वक्त पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत पेनफुल थे। आज तो वो सीएपीडी आने की वजह से बहुत आसान हो गया है, पर फिर भी हीमोडायलिसिस मेरे 5 हुए थे और पेरिटोनियल डायलिसिस 3 हुए थे। टोटल 8 डायलिसिस मेरे हुए थे। मेरी वाइफ मुझे किडनी दे रही थी। किडनी देने वाले तो मुझे बहुत सारे थे, पर कोइंसिडेंट ऐसा कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ मतलब B0। तो सब लोग बी पॉजिटिव थे, मतलब सभी लोग पॉजिटिव थे। आई वुड रिक्वेस्ट, मुझे जरूरत थी कि बी पॉजिटिव होने की, तो मैं भी 0 में से पॉजिटिव हुआ। जैसे ही मैं पॉजिटिव हुआ तो मेरी वाइफ है ना, वो भी पॉजिटिव हुई, उनका भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। तो हम दोनों का ओ पॉजिटिव, दो बड़े गोले मिलके एक हो गए। पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। जिस दिन मेरा शेड्यूल ट्रांसप्लांट था उसके अगले ही दिन केडेवर आया। वो समय ऐसा था कि केडेवर ट्रांसप्लांट कोई नहीं करवाता था। अगर केडेवर आता था तो लिटरली वो वेस्ट हो जाता था। पर मैंने जब इसकी हिम्मत करी कि मुझे केडेवर ट्रांसप्लांट है तो ठीक है। उस वक्त केडेवर को कैसे पढ़ते वो भी नहीं मालूम था। केडेवर लिखा था, मैंने कदावर पढ़ा था। तो इतनी अनजान तो उस बात के लिए। पर मुझे इतना समझ था कि अगर मैं केडेवर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मेरी वाइफ जो है उनकी किडनी बच जाएगी। आगे चल के उन्हें भी तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। बस इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़े। और जिस दिन पता चला उसके 45 दिन बाद मैं ट्रांसप्लांट करवा के घर पर आ गया। उसके बाद में यूटीआई की शिकायत मुझे हमेशा रहती थी। करीबन 1 साल तक यूटीआई की शिकायत बहुत रही। बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा था। और उसका भी सॉल्यूशन 1 साल के बाद आ गया। वो सॉल्यूशन इसलिए आया क्योंकि मुझे सीएमवी वायरस पॉजिटिव था, उसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। सीएमवी का इलाज कर दिया तो यूटीआई भी बंद हो गया। मतलब 1 साल के बाद कंप्लीटली मैं क्योर हो गया। और 6 महीने के बाद तो मैं काम पर भी चला गया। वाओ, दैट इज अमेजिंग प्रसन्न जी। फिर आप ये भी शेयर करिए, आपने जो बताया बिगनिंग में कि प्रसन्न आपके नाम में है, तो आपका नेचर ये ट्रांसप्लांट ने आपको कैसे बदला, वो भी शेयर करिए। हाँ। क्या? आपने जो बताया कि आपके नाम में जो प्रसन्न है, तो इसके लिए आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो भी हाँ, जरा शेयर करिए। देखिए, हमें जीना है। जीने के 2 तरीके हैं, एक हंस के जिए या रो के जिए। तय आपको करना है कि हंस के जीना है या रो के जीना है। हंस के जिएंगे तो दुनिया को पसंद आओगे, रो के जिएगो तो शायद आईने में खुद को भी पसंद नहीं आओगे। तो ये आपको तय करना है, आपको हंस के जीना है या रो के जीना है। दिस इज तो वेरी मैंने इंपॉर्टेंट। नाम का जो रास्ता था वही रास्ता मैंने चुना, प्रसन्नता का। और इट इट वाज द सॉल्यूशन फॉर माय फ्यूचर लाइफ। ये थैंक यू, मुझे थैंक समझ आ यू, गया था। थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रसन्न जी। वेरी नाइस। आपको आपने तो चैलेंजेस तो बताया था यूटीआई, तो एक्चुअली हाँ, एक चीज फिर समझ में आ रहा है कि men हो या women, UTI is one big problem that all of us go through, especially as kidney recipients. Um, okay, so आप मैं I will now move on to the next question. आपने प्रसन्न जी, आपने आपके पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस ओवर द इयर्स कैसे हैंडल किए हैं? आप टाइमिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हो? um, आप ऐसे कभी हुआ है कि आप कभी भूल गए, आपका मिस हो गया, तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है टू शेयर। सो व्हाट मेडिसिन्स डू यू टेक एंड
ये मैनेज कैसे करते हो आप? इतने सालों से आप कैसे करते आए हैं, ये भी जरा प्लीज बताइए। एक चीज बहुत आसान है, कुछ भी मैनेज करना बहुत आसान है। अगर एक काम आप 90 दिन तक करोगे, एक काम अगर आप 90 दिन तक करोगे, तो 91 दिन पर, एट द डे ऑफ 91st डे, इट विल बी योर हैबिट। अगर आप 90 दिन की मशक्कत करोगे तो 91 दिन के बाद वो आपकी आदत हो जाएगी। जब ये आपकी आदत हो जाएगी तो कुछ भी काम आपके लिए कठिन नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है और यही मेरा मानना भी है। Okay. बात रही मैनेजमेंट की। अभी मैनेजमेंट में ऐसा था कि मैं सेल्फ मेडिकेशन सीख लिया। मैंने सेल्फ मेडिकेशन, मुझे जो जो दवाई दी थी वो दवाई क्यों दी है, उसकी जो ब्रोशर्स थे वो सारे मैंने पढ़े। उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इफेक्ट थे वो सब देखे मैंने। उसके बाद में मैंने उसी ढांचे में खुद को ढाल लिया। जब मैंने उस ढांचे में खुद को ढाला तो मेरे लिए बाकी सब आसान हो गया। जैसे पानी नहीं, कहीं भी डालो तो वो उस आकार में हो जाता है। बस वो पानी का उदाहरण मेरे सामने था कि अगर इस पानी की तरह मैं हो जाता हूँ तो जिसमें मिला उसके जैसा, पानी तेरा रंग है कैसा, जिसमें मिला उसके जैसा। तो मैंने मेरे रंग उसी तरह से बदल लिया, तो मेरा सारा काम आसान हो गया। सो प्रसन्न जी, फॉर एवरीबडीज बेनिफिट कैन यू शेयर कि कितने साल हुए अभी आपका ट्रांसप्लांट होके? मेरा अभी 26 साल पूरे होंगे अप्रैल में। वाओ। और ये कैडेवरिक ट्रांसप्लांट था, तो बहुत हाँ, लोगों के कैडेवर मन में ट्रांसप्लांट। एक फियर भी होता है कि कैडेवरिक है तो ये मतलब सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये भी एक फियर होता है। बट आप तो जीते जागते योर लाइव एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव मैनेज्ड इट वंडरफुली। एटलीस्ट अपने हाथ में जो है वो तो हम पूरा पूरा 120% करें, बाकी इट्स ऑल अप टू गॉड, राइट? तो यू आर गुजराती में एक कहावत है, साहस बिना सिद्धि न थी। मतलब बिना साहस के नहीं सिद्धि, सिद्धि बिना साहस के प्राप्त नहीं होती। अगर कैडवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं रजामंद नहीं होता तो शायद आज आपके सामने नहीं बैठा होता। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, आपको एक सवाल पूछता हूं मैं। आप अगर जा रहे हो रास्ते से और आपके पीछे अगर एक कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करोगे? पता है कि अगर वो कुत्ता काटने वाला है तो आप क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? भागेंगे। भागेंगे? कहाँ तक भागेंगे? सही बात है। जब तक कुत्ता नहीं थकेगा तब तक भागोगे, या तो फिर कुत्ते को बोलो भैया आ जा काट ले। कौन सी बात करोगे आप? भागोगे या काटने दोगे? सीधी बात है, भागोगे। यस। बस भागना सीखना है हमें। जो भी चीजें हमारे लिए नेगेटिव है उन चीज से भागना से हमें सीखना है, पॉजिटिव तरह। एक बार मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बार देवलोक जो होते हैं, देव जो स्वर्ग में जो देव होते हैं ना, देव हाँ। सब शंकर जी के पास गए। ये भगवान, ये सूर्य जो है ना, वो हमेशा हमें परेशान करता है, हमेशा हमारी आंखें धुंधला देता है। तो बोले वो उसका नेचर है, आप चले जाओ। उसके बाद में और किसी को कोई शिकायत है? तो अंधेरा बोला हाँ सर, मुझे शिकायत है। बोले क्या शिकायत है? ये सूर्य हमेशा जहां मैं जाता हूँ मेरे पीछे आ जाता है। सूर्य जहां जाता हूँ वहां मेरे पीछे आ जाता है। तो बोले तू जो वो जहां होता है वहां तू मत आ। तभी वो तो सीधी बात है कि हम जहां हम हमें तय करना है कि हमें रोशनी में रहना है कि अंधेरे में रहना है। सूरज जहां जाएगा वहां रोशनी फैलेगी, अंधेरा जहां जाएगा वहां अंधेरा नहीं फैलेगा, वहां रोशनी ही फैलेगी अगर सूर्य की उपस्थिति है तो यही बात है कि जब हमें हमारे खुद के लिए कुछ करना है तो पॉजिटिव रहना ही एक विकल्प है, उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर सर वो शेयरिंग तो दैट प्रसन्न जी। किशोर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यस टू मैम। आस्क? मैडम, या। दोनों से सवाल है, प्रसन्न जी से भी और डॉक्टर सुभा से भी, कि आप दोनों किसी सपोर्ट सिस्टम, मतलब सपोर्ट सिस्टम कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में। और जैसे MKF है, मोन किडनी फाउंडेशन है, तो ऐसे किसी फाउंडेशन या किसी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हो क्या? मैं तो अभी फिलहाल किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ा नहीं था, जुड़ा नहीं हूँ। पहले मैं आपने जोड़ना चाहिए क्योंकि आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। We बिल्कुल would really want you to guide people, be a part, share your experiences, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी हिम्मत मिले, साहस मिले। जो क्योंकि जब ट्रांसप्लांट सोचते हैं तो लोग तभी उस फेज में बहुत एक डरावना फेज होता है
अटक ऐसे जाते हैं ऐसे जैसे वक्त में बहुत हिम्मत मिलती है जब वो किसी और को देखते हैं, तो 20 yes, years 26 years ऐसे, तो इट्स वेरी अभी देखिए, मैं आज कहीं नहीं जुड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं जुड़ा था। हमारा एक ग्रुप था, नव पल्लवित ग्रुप ऑफ आईकेडीआरसी के हम लोग करीब 25 पेशेंट थे, ट्रांसप्लांट पेशेंट, और रेसिपिएंट और डोनर दोनों थे। मतलब उसमें रेसिपिएंट डोनर दोनों थे। हम लोग 25 लोग थे। हम लोगों का एक ग्रुप था, नव पल्लवित ग्रुप ऑफ आईकेडीआरसी। उस ग्रुप को बनाने में एक बहुत जाने माने साहित्यकार है गुजरात के, माधव रामानुज, उन्होंने प्रयास किया था। उस वक्त वो रिटायरमेंट के बाद वो आईकेडीआरसी में एचआर मैनेजर थे। मतलब साहित्यकार भी थे और यहाँ आईकेडीआरसी में एचआर मैनेजर भी थे। और वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। जैसे आज हमारे यहाँ जो मुहिम चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके जनक है वो। ये शायद आप किसी को नहीं पता होगा, उस मुहिम के वो जनक है। उन्होंने बोला कि किडनी फेलियर पेशेंट जो होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के इलाज नहीं कर पाते, तो उनके लिए फंड रेज करना है। उनका उद्देश्य यह था कि उनके लिए फंड रेज करना है। तो उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा किया, जिनको 5 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे मतलब समझो 10 साल के अंदर वाले, जिनका ट्रांसप्लांट को 10 साल से कम समय हुआ, वैसे लोगों को, और जिनकी हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, वैसे लोगों को इकट्ठा किया। हम लोग 25 लोग इकट्ठा हुए। उस वक्त हमने जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के जरिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए। हमारा सबसे पहला अवेयरनेस प्रोग्राम था रोड पर। एक बड़ा स्टेज खड़ा किया उस रोड पर, आम लोगों के लिए वो प्रोग्राम हमने किया। उसमें हम लोग नाटक करते थे, प्री रिकॉर्डेड था। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊपर, मेरा प्री रिकॉर्डिंग बजता था उस वक्त, हम लोग लाइव नहीं बोलते थे। तो उस प्री रिकॉर्डेड नाटक के जरिए हमने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। तो पहला नाटक था, तो उसमें 40 लाख रुपए का फंड रेज हुआ, जो कि रोड पर हुआ था, जिसका कोई कैंपेनिंग नहीं था। बस उस नाटक के दौरान बताया गया था कि यहाँ पर जो भी फंड आएगा वो किडनी के ड्रग्स, पुअर पेशेंट ड्रग को जाएगा। उसके बाद में हम नाटक का सिलसिला चलता रहा। 2008 में हम इतनी ऊंचाइयों पर गए कि उस वक्त हमारे सीएम नरेंद्र मोदी जी, जो आज के देश के प्रधानमंत्री है, वो मेरा नाटक देखने के लिए आए थे। तो वेरी उस नाइस। वक्त हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड था 4 करोड़ 25 लाख। ये सुनील जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे मतलब जो सपोर्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो इस चीज से गुजरे हैं, उन्होंने अवेयरनेस अगर करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वी हैव अ स्टोरी टू टेल एंड पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट। नहीं तो कैडवरिक डोनेशन रेट्स जो इंडिया के हैं आज के तारीख में बहुत कम है। तो इसमें हम सबका एक हाथ है कि हम सब इसको बदल सकते हैं। वी ऑल हैव टू टेक एफर्ट्स लाइक हाउ यू आर डूइंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रेजिंग मनी फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रांसप्लांट्स। ये सब हमें, हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। Thank you for sharing that, Prasanna ji. I would like to ask Dr. Shubha the next question. What do you think is the role of patient support groups in terms of hand-holding each other? You are part of Triumph. So can you share a bit about how has it helped you personally? Of course, it has helped. The when you have, I wish we had this during my time. Firstly, and especially see, you can go to the nephrologist according to the follow-ups. You can go whenever. In the initial times it's around 2 to 3 times in a month, but in the later after 6 months and all, it becomes once a month, and later on it becomes only once. It's up to you. You get your tests done, and if there is any issue, then you go to the doctor. But other than that, you have so many small queries that you want the people to solve. And I see in Triumph the way each and everybody is helping each other. As a doctor, I don't have anything to say because you're all solving it yourself. Whenever I'm about to say it, it's already answer is about given by somebody else, and I feel nice. I wish this was there during my time, because I still remember the transition from the food that we used to take before transplant and after transplant is like, it's 180 degrees different. You are not supposed to take so many things before the transplant, and then they tell you that okay, you take your food, no restrictions as far as food is concerned. So I used to have
queries for everything. You know, I used to feel, can I take this? Can I take that? Because I always had these doubts, you know. So I used to call up the residents and ask them. Then one day, when I had gone for a follow up, I had a small list of fruits which I had written. Can I have this, 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 this? So he said, I still remember Dr. Shastri saying, you can have this in Telugu, he had said, this big jackfruit, no issues. So that solved all, that gave all the queries were solved, you know, that's how it was. Right. So that was one thing I have seen in Tram, especially when you solve all, answer all these questions. Whenever possible, I try to, but before I try to answer them, but it's already answered. What can I say? We are a very active, proactive Very group. active. Congratulations to you No, no, and no. Kishore and everybody No, there in credit Tram. goes to every member Yes, जो उसमें everybody contribute there. कर रहा है, their Yes, eagerness to help each other. and So I yes. think that is very important. And another thing is these inspiring people, you know, especially when I came to know about Krishna Ram Sharma ji, and then you come to know about people like Bharat, dear Bharat, who is all, Yeah. going all around the world with 3 transplants. And when you come to know about Kishore and his marvelous work that he is doing, you, and then who else? Preeti and the transplant games, Kishore and the transplant games. It's so inspiring. I wish I had known this. I would have gone into this marathon earlier. Now, Thank you know, with a little more few issues of my bones and all, I am not able to take part in all this. But I wish these social media platforms were there 10 years back and 15 years back. Maybe I would have started. This is exactly the reason I think it's very important to have support groups mentally as well. Mentally, when you see everybody going through this, you feel चलो हम नहीं बाकी सब भी इस दौर से गुजर रहे हैं. That's another one thing you feel mentally. Also, you feel that you know you're not the only one going through the whole thing. So of course, Okay, Kishore, you want to ask the next I question? have again one question to both of you. Uh, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप दोनों को हमेशा मोटिवेट रखती है? मतलब एक जो वॉरियर हम बोल रहे हैं आज, तो वो वॉरियर बनने के लिए कौन सी बात है जो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो हमेशा? दोनों के लिए मेरा सवाल. One thing, if that was one main thing, then what would it be? जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़े तो हमें भागना एक ही ऑप्शन है. हाँ, क्या ये मोटिवेटिंग नहीं है? सेल्फ मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है? Yes. जब हमें हंसकर ही जीना है तो बस यही हमारा मोटिवेशन है और यही हमें मोटिवेट करता रहता है. देखिए, एक चीज होती है, अंडा जो होता है ना वो दो तरह से टूटता है. एक तरीका ऐसा है कि हम उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड देते हैं और टूट जाता है. दूसरा तरीका यह है कि अंडा अंडा जो होता है अंदर से टूटता है. दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम बाहर से तोड़ते हैं तो एक जीव का अंत होता है. दूसरा ये है कि जब वो अंदर से टूटता है तो एक सुंदर जीव इस दुनिया में आता है. एक सुंदर जीव इस दुनिया में आता है. तो मोटिवेशन यही बात है कि मोटिवेशन किसी के थोपने से नहीं आता. मोटिवेशन खुद अंदर से ही होता है. सबके पास असीम क्षमता है जो खुद को मोटिवेट कर सके. उसमें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है. हाँ, बाहरी Fantastic. मोटिवेशन क्या होता है वो हमारे लिए गाइडलाइन हो सकती है पर वो मोटिवेशन नहीं हो सकता. यस. मोटिवेशन तो अंदर से ही आएगा. शुभा, और वही मैडम, मोटिवेशन सच में होगा. fantastic, प्रसन्न जी, आपका ये we should note down your quotes and use it somewhere. It's so nice. Thank you. what can I say when he said such a wonderful thing, really? But personally, if you tell me, I was 33, 35 when I got underwent a transplant. I had a 5-year-old daughter, so I would say I wanted to see her grow up. I wanted to educate her. I wanted to teach her so many things which I had learned over the years, and I wanted her to be independent. I wanted so many things for her. I think that was a very motivation. Maybe वो मेरे अंदर की वो आप जो बोल रहे हो Yes. उसको I mean he could say it much better in हिंदी. अंदर का जो जोश है वो उसको प्रोत्साहन उसी वजह से मिला है. यस मैडम. Yes. मतलब ये कह सकते हैं कोई वजह अगर मिल जाए हमें Yeah. ट्रांसप्लांट के बाद, मतलब
ऐसे भी अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी हो, लेकिन खास करके ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर वजह मिल जाती है, तो मुझे लगता है एक लाइफ की जो कैपेसिटी है और वो मतलब इंक्रीज हो जाती है। नहीं, और हर एक के पास मुझे लगता है एवरीबडी हैज इट। वो मुझे लगता है वो मोटिवेशन लेके चलते हैं। वो कहीं एक दूर तक जाने के बाद वो फेड हो जाना नहीं चाहिए। जब वो फेड हो जाता है तब देन द ट्रबल स्टार्ट्स, यू नो। Yeah. So everybody has motivation. I'm sure everybody has it. Okay, now before we go to the next question, we will be taking one or two questions from the audience because audience are getting very impatient. Prashant Kulkarni ji is asking कि आपका routine, diet, exercise ये सब कैसे है? आप लोग stress कैसे manage करते हो? ये मुझे भी आपको पूछना है कि how do you manage stress? Because एक बार ट्रांसप्लांट हो गया, आफ्टर अ फ्यू इयर्स एक रूटीन में चले जाते हैं हम लोग, फिर वर्क प्रेशर वो सब ज्यादा फोकस में आ जाता है. हाउ डू यू मैनेज योर डाइट? हाउ डू यू मैनेज योर फिटनेस और एक्सरसाइज? हाउ डू यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस? शुभा, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? उसके बाद प्रसन्न जी कैन. So diet, I am a vegetarian, and I had no other habits. So 35 years at transplant, and I had a 5-year-old child. So we had a very simple food because it was easier to make simple food and go for work with a 5-year-old child, run around with her and go for work and do everything. So I don't think there was any change in my diet as such. Uh, and nutritionist and all it's all a new concept. That time we didn't have anybody. And when the nephrologist and the residents would itself look into the diet and all, and they would say, fine, don't do anything don't overdo anything. I remember I telling everybody, whoever would ask, moderation is what is most important. Even if though I was not a diabetic, I was not hypertensive, so sugar and sweets, I would take sweets, but not too much. I was a rice eater. I had a trouble getting I couldn't make chapatis, and making chapatis and running for work was very difficult. So I couldn't get a chapati maker, the person to make chapatis. So I would eat rice. Maybe that is one mistake that I have done. So whatever sugars increase would have, I could have delayed my increase in the sugars. So Yeah, because steroids, as a side effect of steroids, you tend to it tends to push up your diabetes. Yeah, and I was not. We were in a place where getting somebody outsourcing chapati making, there was nobody there. So in that part of Hyderabad where I couldn't get somebody to make chapatis for me, and working was very important because we were still forming a family, and we were middle class families. We were not. There was no outside income for us. And ये जो immunosuppression के medications वगैरह भी Medications and everything, yeah. And so the job was very important for me. And after this, as far as but of course, I adhered to one of the most important things is no street food, boiled water. Till date, I have not had anything but boiled water. And when I'm traveling, it's only bottled water. And I'm also very particular about the company that I take as far as the bottled water is concerned. So I stick to 3 or 4 companies, and I don't take the Pan Tapri wala bottle and all those things. So because I'm a little skeptical of very important point. Yeah, actually. yeah. So and no street food, no salads, no outside cut fruits, and strictly adhering to my medication, following. See, as a person from the medical profession, I knew that to keep my kidney healthy, the most important thing I have to do is stick to my medication strictly, and also the timing. And also I also knew that that I had to get my lab test regularly, because rejection is very silent, and lab tests are the only tests that can detect rejection. So you don't have any other complaints. When there is a rejection, you have absolutely no complaints. So lab tests are the most important thing.
that you come up, you will know only through lab tests if there is a mild rejection, and it can be easily corrected when it is in the initial stages. So being in a medical profession, this is one thing which I had absolutely kept in mind. So sometimes I think, and over the years, I would not go to the doctor, but I don't think I have ever missed my lab test. And I think after 7 or 8 years, it becomes twice a month. And then later on, now it was thrice a month, but now after 20 years, they have again come down. They said, no, twice a month. Now you do it twice a month. Twice. Sorry, I'm so sorry. It comes down to once in 2 months. Then it came up to once in 3 months. Again, now they're asking me to do it once in 2 months. So again, I'm sticking to once in 2 months. At the most 10 days, I will delay it. I may not go to the doctor, but I'll surely do my test. Thank you for sharing that, Shubha. Yeah. So the lessons that we learn is that don't miss your tests. Do your tests, and you may not go to the doctor and show it, but at least आप अपने ये टेस्ट जो है डॉक्टर या आप उनकी टीम से आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, क्योंकि अगर कुछ आगे पीछे है तो दे कैन ऑलवेज टेल यू ओके कम दिस इज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस, you need to get this checked. And I also want to ask you all, sorry. No, I send the WhatsApp message nowadays, because WhatsApp is there. I just send it because everything is fine. I also give my BP, blood pressure. I'll send my blood pressure. I'll give my blood sugar. This much I do. That's it. And once in a year, I definitely go. In fact, sometimes I go a little earlier also if I have any complaints. I go a little early. And one more thing I wanted to say that, can I add one more thing? Okay. Let us go to the Mr. I'll come back. Mr. Yeah. Okay, so I wanted to do a quick poll. How many of y'all are setting an alarm in your mobile phones to have medicines? Raise your hands if you are. I mean, you can do that reaction thing. Anant, yes. Nishi, yes. Okay. So, okay. So quite a few of them are doing that. You can also type in the chat box. Sagar is saying yes. Atul is saying, oh, fantastic. Okay. Because that's what I do. मैं भी ये अलार्म सेट करके ये सब चीजें फॉलो करती हूँ, क्योंकि क्या है बाकी सब चीजों में फिर अपने को याद भी नहीं रहता है खाया कि नहीं. कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अलार्म भी बंद कर देती हूँ एंड आई गेट बैक टू वर्क एंड देन आई आल्सो फॉरगेट दैट अरे मैंने खाया कि नहीं आज सुबह करके. सो वी शुड नॉट डू दिस. So now I keep snoozing it till I have the medicine and then only shut it off. So I just wanted to quickly and just if anybody who doesn't have a smartphone, there might be some people, elderly people or somebody who doesn't have a smartphone, we used to have a notebook back then. In 2003 there were no smartphones, and then you can just go on ticking. The moment you have your medicine, you just tick it. That could also be a good method. Jaya doesn't agree with that. She's a modern woman. ओके प्रसन्न जी, आप प्लीज शेयर करिए आपके जो मेडिसिन के रूटीन्स रहे हैं. और सॉरी, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? वी वर टॉकिंग अबाउट challenges and yeah, Kishore's question to you now, प्रसन्न जी. मैंने कभी अलार्म सेट नहीं किया, ना ही कभी करता हूँ. अच्छा. मेरा एक अनुभव रहा है कि अगर आपको कुछ करना है और आप तय कर लेते हो कि मुझे इस समय पे ये करना है, जैसे सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, उसके लिए 3 बजे से उठना है, आप रात को तय करके सो जाओ. सोते वक्त सिर्फ अपने जो इष्ट देव है, जिनको भी आप फॉलो करते हो, उनसे एक बात बता देना कि मुझे 3 बजे सुबह उठा दो. आई कैन गारंटी यू कि सुबह 3 बजे अपने आप आपकी आंख खुल जाएगी. प्रसन्न जी, आप एक्सेप्शन हो. Okay. There's another question from the audience. Farzana is asking, she would like to know from both the warriors about your food habits, if they follow any restrictions. I think food habits so aapne discuss kar liya, but do you follow any restrictions? So Shubha said that she doesn't eat outside. Do you eat outside food, Shubha? If it's a good I do eat outside. It's not, I don't eat street food, but I used to eat it before my transplant. I was a big fan of what, especially if you're in Bombay, तो pani puri, sev puri, chaat, ये सब तो चाहिए ही चाहिए. So when I was young, yes,
at least. Yes, exactly. Mineral हो. Yeah, but now the thing is, anything that is fresh out of the, I mean, like even when you go to a small restaurant, also a dosa which comes right out of from the tawa, or even bhaji, even if it's not good for health, but sometimes when you're traveling and all, you have to have something. So when it comes right out of that particular oil, boiling oil, okay, I had that. And any restaurants, it's always better to have steamed food, fresh, I mean, hot food. Hot food. Even when you had an idli or something, I would not have the chutney. I would rather have the sambar. It's something like that. And I always chapati and dal was my favorite. And if the sabji is hot and not very oily, yes. So that's Great. Nice. yeah. प्रसन्न जी, आपने कुछ restrictions पाला है डाइट में या कैसे आपने मैनेज? यू आर म्यूटेड प्रसन्न जी. ये भी शेयर करिए डॉक्टर कि आप शुभा, मैं बाहर आपको एक सवाल खाते पूछ हैं. सकता हूँ? अच्छा, शुभा, that question is for you. हेलो डॉक्टर शुभा, मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए बोलिए. क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका तय कैसे करेंगे आप? क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? ये तय कैसे करेंगे? He's such a literary person, you know. I'm such a scientific person, so there's a clash here. so, देखिए, so मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. there he goes. मेरी छोटी बहन है ना, वो हम्म. यहाँ बड़ौदा के पास वासद में रहती है. वासद एक चरोतर, जो गुजरात का एक चरोतर का भाग कहलाता है. वो चरोतर में है ना, सबसे अधिक पैदावार जो होती है ना, वो तंबाकू की होती है. Okay. अभी मुझे तो नहीं पता था तंबाकू की तंबाकू होती है, इतना पता था तंबाकू होती है. एक दिन मैं और मेरे जीजा जी, हम ऐसे सुबह सुबह घूमने गए, तो मैंने देखा कि खेती जो होती है ना, मतलब जो खेत होता है ना, खेत के वहां कुछ ढोर चल रहे थे, केटल्स चल रहे थे. तो मैंने सोचा ये अभी अंदर आ जाएंगे, हरा भरा खेत है, वो सब उजाड़ देंगे. तो मैंने जीजा जी को पूछा, ये यहाँ के लोग ये उसको ये बॉर्डर नहीं करते खेत को, खेत के पीछे वो फेंसिंग नहीं करते? तो बोले नहीं करते. बोले क्यों नहीं करते? तो बोले ये तंबाकू के ये जो पौधे हैं तंबाकू के हैं, ये ढोर नहीं खाएंगे इसको. मतलब ढोर को पता है कि ये तंबाकू है जो नहीं खाना है, और इंसान उसी को खाता है. अभी इससे ये सीख मिलती है कि अगर गधे, आप देखो, एक ढोर है गधा, हम अगर किसी को गधा बोल दिए तो समझो उसको गाली दे दिया. पर ये गधा है ना, उसके पास हाईएस्ट सेंस ऑफ ईटिंग है. क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, गधे से अच्छा किसी को नहीं पता. आप देखिए, गधा कभी बीमार नहीं होता. क्यों बीमार नहीं होता? क्योंकि उससे वो तय करता है कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए. तो बस गधे की ये थियरी जो है ना, वो हम अगर एडॉप्ट कर ले, एक बार आंख बंद करके सोचे कि मेरे सामने जो खाने के लिए आया है, क्या वो गधा खाएगा? अगर आपका मन कहता है कि हाँ ये गधा खाएगा, तो आंख खोल के आप चुपचाप खा लीजिए, आपको तो कुछ नहीं कागज होगा. भी खाना पड़ेगा. हाँ, कागज गधा कभी नहीं खाएगा. अच्छा. गधा कभी कागज नहीं खाएगा. प्रसन्न जी आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. सो नहीं यार, मेरा मेरा यही है. अभी अभी पिछले हफ्ते मैंने और किशोर जी ने साथ में गोलगप्पे खाए. नहीं खाए ऐसा नहीं है. नाइस, वेरी नाइस. नहीं, हम भी खाते हैं, बट थोड़ा बिस्लरी पानी से बनवा के खाते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. नहीं, हमने तो पब्लिक स्पेस में खाया है. आपको कितने बच्चे हैं प्रसन्न जी? एक बेटी है और एक बेटा है. अच्छा. जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तब मेरी बेटी 1.5 साल की थी, और बेटा अभी 21 साल का है. Okay, we आपका move on to the next question. Achal is asking, after taking medicines for a long time, means over a period, fairly long number of years, is there any, have you experienced any side effects, in the longer run? She's also asking कि कोई cognitive changes like forgetfulness, ऐसे कुछ आपने medicines के वजह से आपको क्या changes दिख रहे हैं क्या? प्रसन्न कुमार जी, do you want to share first? एक चेंज मुझे में जरूर आया है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गया हूँ. Short tempered, okay. शॉर्ट टेम्पर बहुत हो गया हूँ. ऐसे कोई लगता मुझे नहीं बोल है. देता तुरंत से मैं पेशेंट खो देता हूँ.
बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गया हूँ। बट वो इम्यूनोसप्रेशन की वजह से तो मुझे नहीं लगता है। पता नहीं, वो ये ट्रांसप्लांट के बाद ही ये हुआ, तब तक नहीं था। अच्छा, ओके ओके। शुभा? Yeah, long-term side effects of transplant medicines are there, and I had the first one, as I said, seromus. Because of seromus, I had my ovaries, which had enlarged up to around 10 centimeters, and because as I said, I had suddenly had a severe pain in the abdomen, and I realized that pain was not a simple pain. Something told me it's not a very simple pain, and I rushed to Hindura emergency, and it turned out to be a twisted ovarian uh, cyst. So it was an absolutely emergency operation. Now, the reason I'm telling this is that any small change anybody feels in their body, you need to go to the doctor, because you have some change, some of these. Now, this is all women and man related. Some men may not have some of the issues, women may have some of these issues. The second transplant related, medicine related things that I developed is the diabetes. Because in my family, my father developed diabetes. Shubha, there is a request that you speak in Hindi, please. Can you Acha. do more of Hindi English mix, please? Yeah. But if I suddenly switch off to English, please remind me like this, because Sure, it's by default I'll switch no to problem. English. हाँ जी। तो मैं क्या बोल रही थी? Women के ट्रांसप्लांट लिए मेडिसिन, हाँ हाँ, ज्यादातर ट्रांसप्लांट प्रॉब्लम्स। मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं लेडीज में, तो मेरे डेफिनेटली। मेरे 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 साथ जो हुआ है वो ओवरीज, मेरे ओवरी, एक ओवरी एनलार्ज हो गया था, और वो ट्विस्ट हो गया था, और जिससे मुझे सीवियर पेन हो गया था एब्डोमेन में, एंड मुझे इमरजेंसी सर्जरी जाना पड़ा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी को सबको हो जाएगा, बट कोई स्मॉल चेंज, स्पेशली इफ यू हैव, स्पेशली जब अगर आपको पेन इन एब्डोमेन, अगर एब्डोमेन में पेन हो, या आपको कुछ कुछ तो अनकंफर्टेबल, सब कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा हो आपके बॉडी में, आप एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाके चेकअप करवाना, उन्होंने जो कहा वो टेस्ट करवा देना। सो एंड सेकेंड थिंग इज, मेरे में जो मेडिसिन की वजह से जो चेंजेस जो हुए हैं, वो है कि मुझे डायबिटीज डेवलप हुआ। मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं था। मेरे पिताजी को रिटायरमेंट के बाद, जस्ट 7 साल बिफोर ही पास्ट अवे, नहीं, around 15 years before he passed away at the age of 80. So 15 years before he passed away, that is when he was around 65, 67 or something, he developed diabetes. So I developed diabetes because it must be hereditary, mildly hereditary thing, and none of my brothers don't have any. Now they are in their 50s, but they don't have high blood sugars, or maybe it must be because of seromus, which is known to cause diabetes. And another thing that I developed because of medicine is early cataract. I developed both my eyes. I have undergone a cataract operation, and also the steroids. Transplant medicine में steroid भी आता है, तो steroid की वजह से अपने लेडीज को बोन्स का प्रॉब्लम भी होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ है मुझे। सो वैसे देखे हुए तो, बट सबके लिए सॉल्यूशंस है, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है आपको। वो सबके लिए मेडिसिन है। तो अभी मेरा ट्रांसप्लांट का मेडिसिन तो एकदम मिनिमल हो गया है, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट्स, डायबिटीज का मेडिसिन ऐड हुआ है, और लिपिड्स डेवलप हाई हो गया है, वो वाला मेडिसिन ऐड हुआ है, और व्हाट एल्स, या ओके। एंड कैल्शियम, ऑफ कोर्स कैल्शियम, सबको कैल्शियम एज पर एज ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए आपको बीएमडी करना ही है। सो ये तो साइड इफेक्ट है ही स्टेरॉइड्स का, तो आपको बीएमडी, बोन मैरो डेंसिटी करना ही है एवरी 2 years। सो ये सब चीज अगर आप करोगे, और कैल्शियम टैबलेट्स बहुत महंगा भी नहीं होता है, तो कैल्शियम टैबलेट्स और विटामिन डी आपको डॉक्टर्स बता देंगे, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू शुभा, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि somehow मुझे लगता है शुभा और मैं सोल सिस्टर्स हैं। हमारे जो भी सब इश्यूज साथ साथ चले हैं, ऑफ कोर्स मेरा अभी 13 years कंप्लीट हुआ है, बट
या लास्ट ईयर मेरा भी ऐसे सिमिलर, मेरे भी सिमिलर इश्यूज हुए थे, एंड शुभा वाज वेरी हेल्पफुल इन गिविंग मी द कॉन्फिडेंस। मुझे भी एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रॉइड्स डेवलप हुए, जिस वजह से आई वाज एडवाइज्ड हिस्टेरेक्टमी, और मेरे यूट्रस रिमूव किए गए, ओवरीज आर इंटैक्ट। ऑल्सो ड्यू टू 12 years ऑफ स्टेरॉइड यूज मुझे भी कैटरैक्ट डेवलप हुआ, एक आंख का कैटरैक्ट हो गया, दूसरा इज not yet there. So these are the challenges, I think more so women में ये face होता है, especially as we move towards the menopausal age. Yeah. So Deep wants to ask, any change in sleeping pattern either side, any impact of medicines on skin related ailments, please share. I think skin का काफी लोगों का एक complaint तो रहा ही है, skin eczema, especially after transplants. Even I had an issue, to be very honest. So any of y'all would like to comment on that? Prasanna ji or Dr. Shubha? अभी बात जो आती है स्किन डिसीज की, वो तो होता ही है, तो उसके सामने उसकी जो भी मेडिकेशन है वो करना ही पड़ता है। मुझे भी स्किन डिसीज तो होता रहता है, पर इसको ज्यादा मैं लाइटली लेता हूँ। इतना है कि इग्नोर नहीं करता हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इग्नोरेंस नेवर प्रिवेंटेड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो इसको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, पर ज्यादा महत्व भी नहीं देता हूँ। दूसरी बात, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की आपने कही, ऑस्टियोपोरोसिस है ना, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है स्टेरॉइड की वजह से, ओमनाकोर्टिल की वजह से एक कॉमन प्रॉब्लम है। वो महिलाओं में ज्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है, पर होती तो है। मैंने ऐसे केस देखे हैं कि चलते चलते आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया, अभी उसको कुछ लगा भी नहीं, चलते चलते फ्रैक्चर हो गया, तो इट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मुझे भी जॉइंट पेन हुए थे, करीबन 13 साल हो गए उस बात को, मतलब ट्रांसप्लांट को सिर्फ 12 साल हुए थे, उस वक्त मुझे जॉइंट पेन था, तो मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास गया था। अभी सुनिए क्या होता है कि मैं ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के पास गया तो उन्होंने बोला कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अभी एट द एज ऑफ 40 नी रिप्लेसमेंट कितना एडवाइजेबल है? तो ये मैंने सोचा कि ये कुछ कुछ तो भी गलत है। वही कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो एक्सरे लेके मैं और कहीं गया था दूसरे किसी काम के लिए, वो सामने वाला रेडियोलॉजिस्ट था, तो उनको मैंने मेरे एक्सरे बताए, तो बोले थोड़ा सा रिस्क लोगे? मैंने कहा रिस्क लूंगा। बोले आपको जो रोप डोरिया कूदते हैं ना लड़कियां बचपन में, वो वैसे उसको कूदिए, हो सकता है आपका जॉइंट पेन अच्छा हो जाए। यकीन मानिए, मैंने डोरी कूदना शुरू किया और मेरा जॉइंट पेन अच्छा हो गया। आज तक मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं है, करीबन पिछले 13 सालों से। मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है, उसी तरह हमारी जो ट्रांसप्लांट होता है ना, सर्जरी की भी साइड इफेक्ट होती है। शायद आपको सर्जरी की साइड इफेक्ट नहीं हुई होगी कभी। सर्जरी के साइड इफेक्ट में मुझे आपको एक पता होगा, लिम्फोसिस, लिम्फोसिल मालूम होगा सर मैडम आपको? तो मुझे लिम्फोसिल का प्रॉब्लम हुआ। लिम्फोसिल में क्या होता है कि ब्लड कंपोनेंट लिम्फ होता है, वो पेट में जमा होता रहता है। तो मेरा इतना सीवियर था, और इतने सालों के बाद हुआ था, 10.5 साल के बाद हुआ था। तो ये पहली बात की जो लिम्फोसिल मुझे हुआ ना, वो विश्व में पहली बार ऐसा किसी को हुआ कि जिसको 10 साल के बाद, ट्रांसप्लांट के 10 साल के बाद लिम्फोसिल हुआ। दूसरी बात, लिम्फोसिल ज्यादातर क्या होता है कि 15-20 दिन में अपने आप क्योर हो जाता है। मेरा क्योर हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। मुझे वो एक सर्जरी किया, उसको मास्कुलेशन सर्जरी बोलते हैं। मतलब देशी अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इंटरनल ड्रेनेज रखा, क्योंकि एक्सटर्नल ड्रेनेज जब रखा था तो हर रोज 2 लीटर का फ्लूइड निकल 2-2.25 लीटर फ्लूइड हर रोज निकलता था, और करीब 8 महीने तक निकला ये। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी साइड इफेक्ट ये हुई कि मेरा जो ब्लड में प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन लेवल कम होता गया, मतलब 3.5 से भी नीचे चला गया। अभी इन लोगों ने ये सोचा कि अगर इसका प्रोटीन लेवल इतना नीचे तक गिर गया है तो इसका हार्ट तो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। उसके बाद डिसीजन लिया कि अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इसको इंटरनल ड्रेनेज दे दो। तो इंटरनल ड्रेनेज मुझे दिया। उसके बाद में मतलब जहां से वो लिम्फोसिल लिम्फ है, वो जहां से निकलता है वहां से वो वापस पेरिटोनियल कैविटी में उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। तो उसकी वजह से मेरा अभी ये देखिए, ये कुदरत के जो नियम है ना, कानून है, उसके विपरीत है। इट इज एडवर्स टू नेचर। जब एडवर्स टू नेचर होता है ना, तब उसकी साइड इफेक्ट आती ही है। तो मेरी साइड इफेक्ट ये है कि मेरा पेट है ना इतना बड़ा है कि किसी को लगेगा कि मुझे बहुत लोग सलाह देने भी बैठ जाते हैं कि आप ये खाइए वो खाइए,
वो किसी को पता होता नहीं है कि पेट क्यों बड़ा है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जलोदर, उसको हाइड्रोसिल बोलते हैं इंग्लिश में, उसी तरह ये लिम्फोसिल है। ये हाइड्रोसिल में क्या होता है कि जो हमारे आंतें होते हैं ना, इंटेस्टाइन जो होते हैं, उसके बाहर वो फ्लूइड इकट्ठा होता है। ये उसके अंदर होता है। वो हाइड्रोसिल में इंटेस्टाइन के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, लिम्फोसिल में उसके बाहर वो फ्लूइड इकट्ठा होता है। तो तो ये मेरे पेरिटोनियल कैविटी में डाइवर्ट किया है। अल्टीमेटली इट इज एडवर्स टू द नेचर। तो उसकी वजह से मेरी दोस्त बहुत बड़ी है। देखिए आप, मैं मेरे छाती के ऊपर का एक भाग दिखा रहा हूँ, नीचे का भाग नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी दोस्त मटके जैसी बड़ी है। पर उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर हाँ, मेरा नेचर जो है वो थोड़ा फनी है, मैं कॉमेडी कर लेता हूँ, उसकी वजह से कोई बोलता है ये पेट कितना क्यों बड़ा है, तो मैं कौन सा महीना चल रहा है अभी, अभी जनवरी तो पहला महीना है, सितंबर तो 9वां महीना है, जवाब देने में कोई कतराता नहीं हूँ। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमने सीखा है आप दोनों से कि पोस्ट ट्रांसप्लांट कुछ ना कुछ अप डाउन्स रहेंगे, बट उसे तुरंत हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए। हमें वी शुड प्रोएक्टिवली रिकॉग्नाइज द सिम्टम्स। जो भी चेंजेस है बॉडी में वो हमने रिकॉग्नाइज करके डॉक्टर से तुरंत पॉइंट आउट करके उसका जो करेक्टिव एक्शन है वो हमें तुरंत लेना चाहिए, ताकि डॉक्टर सही समय पे जो करेक्टिव एक्शन है वो कर सके हम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शायद कोई भी नहीं होगा जो कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी इश्यूज है। लॉन्ग टर्म इश्यूज मेडिकेशंस की वजह से शायद होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही तरीके से उसे सही डॉक्टर से बात करके इसको तुरंत इसे करेक्शन करवा लें, या जो भी रेमेडियल एक्शन है वो करवा लें। थैंक यू बोथ फॉर शेयरिंग दैट। देखिए, आप इस बात को कैसे लेते हैं, जैसे आपने कहा कि कैटरेक्ट हुआ था, हाँ, एट द एज ऑफ 35 कैटरेक्ट हुआ है, तो सोसाइटी में किसी को पल्ले नहीं पड़ेगा, इतनी छोटी उम्र में थोड़ी ना कैटरेक्ट होगा। मेरे भी 35 साल की उम्र में कैटरेक्ट हुआ था, तो मुझे कोई पूछता इतने छोटे साल में तो कैटरेक्ट नहीं होता है, कुछ गलत हो गया है। तो फिर मैंने कहा कैटरेक्ट अभी इसलिए हुआ क्योंकि बुढ़ापे में मैं आसानी से सब कुछ देख सकूं। Nice, very nice. But one message for everybody that keep checking your eyes every year. आंखें चेक करिए, ग्लोकोमा चेक करिए, एंड कैटरैक्ट, ये सब चीजें, रेटिना भी चेक करते रहिए। साल या 2 साल में एक बार करना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, आंखें इग्नोर कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा चेकअप करना चाहिए। नहीं, और एक एडवाइस मैं दूंगा कि आंखें जैसे आपने बताया ना साल में एक बार, तो वैसे दांत के लिए भी जब हम सिरोलिमस या साइक्लोस्पोरिन लेते हैं ना, तो इससे भी दांतों के गम्स होते हैं ना, जो गम्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी हर 6 महीने में मैं डेंटिस्ट को कांटेक्ट करता ही हूँ। मतलब क्लीन करवाते हो, क्या करवाते हो डेंटिस्ट से? हाँ, डेंटिस्ट से दांतों की क्या ट्रीटमेंट करवाते हो? ज्यादातर क्या होता है, या तो जो कैल्शियम की कमी होती है उसकी वजह से हमारे दांत जो होते हैं वो गलने लगते हैं। हाँ। दूसरी बात यह होता है कि गम्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं। कभी साइक्लोस्पोरिन लेने वाले बहुत सारे पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके गम्स को काटना पड़ा है, इतने बड़े एनलर्ज हो जाते हैं। अच्छा। मतलब इसके लिए, और दूसरी तीसरी बात कि अगर माउथ हाइजीनेशन नहीं होगा तो दूसरे सारे इन्फेक्शन होना आसान है। Yes. अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ओरल बाहर हाइजीनेशन खाना नहीं नहीं होगा तो चाहिए, दूसरे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ओरल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल देयर आर हाइजीन लॉट बहुत ऑफ इंपॉर्टेंट जर्म्स है। ओवर देयर। यस, करेक्ट, सही बात है। अच्छा, आप देखोगे, मेरे बैग आप कभी भी देखोगे, मैं जिस भी सिटी में जाऊंगा ना, मेरे साथ मेरे बैग में 2 ब्रश हमेशा रहेंगे। इवन मैं विद इन सिटी जाऊंगा फिर भी मेरे पास 2 ब्रश हमेशा रहते हैं, क्योंकि मान लो कहीं किसी के यहाँ खा लिया तो उसके वहां वॉशरूम में जाकर दांत साफ कर लिया। Cyclosporin have तो a lot ओरल of हाइजीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भले ही सब चीजों को इतनी लाइटली लेता हूँ, या तो इतनी फनी लैंग्वेज में, या तो किसी भी साइड से देखता हूँ, पर ये ओरल हाइजीनेशन और सेल्फ मेडिकेशन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट के लिए। Lakshmi is asking, does minimum steroid dose also cause osteoporosis? Lakshmi, there is, so the steroid doses, all the medication के जो doses है वो हर एक के body weight के हिसाब से दिए जाते हैं। over a period of time steroid के doses भी minimum कर देते हैं सबके लिए, लेकिन हर एक का body अलग react करता है, especially if we are women. As we age, go closer towards menopausal age, there could be tendency, जब हमें छोड़ो द नॉर्मल विमेन को ही ऑस्टियोपोरोसिस, हु आर अदरवाइज हेल्दी, उनको ही अगर होता है, तो वी हैव टू बी मोर ऑन द वॉचफुल, ऑन द वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स। तो अगर सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है।
I am on minimal steroids since last 15 years. Minimal steroid is 5 milligrams. So I'm on 5 milligrams since the last 15 years. But still I have developed cataract. I have developed osteoporosis. Yeah. देखिए, और मेरी एक स्टीरॉइड जो क्वेश्चन, है ना, हाँ जी मेरी प्रसन्न जी। स्टीरॉइड 10 मिलीग्राम चल रही है। It is मैं individual 10 साढ़े based. 10 मिलीग्राम करता हूँ या 5 मिलीग्राम करता हूँ, तो मुझे है ना कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है फ्लूइड रिटेंशन का। तो मतलब स्टीरॉइड है ना, वो हर एक के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से वेरी होती रहती है स्टीरॉइड का डोज। तो स्टीरॉइड के जो साइड इफेक्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस है या कैटरेक्ट है और कुछ भी है, जैसे बाल झड़ जाना, ये तो रहेगा ही। वो 5 मिलीग्राम है या 15 मिलीग्राम है या 25 मिलीग्राम है, उसकी इफेक्ट तो सेम रहेगी। राइट। Even with 5 milligrams, every individual will behave differently. Even if everybody has 5, if suppose there are 20 patients who are having 5 milligrams, everybody need not have cataract. And somebody may be on prednisolone, somebody may be on some other omnacortal or something. So ऐसे कुछ स्टैंडर्ड इसका रूल नहीं है, बट नो दैट ऐसा हो सकता है, so you have to be on the watch out. Omnacortal is prednisolone. Ultimately, the pharmaceutical name is prednisolone. Prednisolone, yeah. Yeah. All right. So some people, okay, there have been more questions to do with आप क्या exercises, कौन से exercises करना चाहिए, किसी को weight increase हो रहा है. So please know that weight increase is again a side effect of the steroids that we take. Weight increase is not good. If you're thinking कि आपके जो normal weight है उससे ज्यादा हो रहा है, तो आपको exercise करना ही पड़ेगा. Walks करिए, right? डॉक्टर शुभा, प्रसन्ना जी, वॉक हर रोज 1 घंटा तो कम से कम चलना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करिए. और डॉक्टर को पूछ के आप जिम भी जा सकते हो, ट्रेडमिल कर सकते हो, बट वेट लिफ्टिंग मत करिए टिल 1 year ऑफ द ट्रांसप्लांट. उसके बाद भी आप डॉक्टर को पूछ के फिर आप वेट्स एंड ऑल कर सकते हैं, मिनिमल वेट्स कर सकते हैं. बट जिम जाने से पहले डॉक्टर से एक बार जरूर परमिशन Consult ले करें। लें, ये बहुत ही और इंपॉर्टेंट है. But yes. Kishore, you are the athlete. Can you please guide on how to control your weight and what exercises to do, do's and don'ts? सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ना, वो डाइट का होता है अपना, वो ऑब्वियसली। और एक्सरसाइज का जैसे आपने बताया कि डॉक्टर से आप पहले कंसल्ट कीजिए, और बेसिक तो आप अपने लेवल पे भी एक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ट्रांसप्लांट के बाद किसी का मैसेज आया है कि 6 मंथ या 4 मंथ हुए हैं, सो आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हो। पहले दिन मतलब शुरू में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा करके आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जो स्टेमिना आपका बढ़ा सकते हो। और वॉकिंग के बाद आप जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे फास्ट रनिंग करना है या किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, खास करके एथलीट्स गेम्स या इस तरह के जो गेम्स है, तो आप आइडियली कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से। और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज की ओर आप बढ़िए, आगे बढ़िए। और जैसा आपने कहा कि काफी वेट और वो लिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क हो सकता है। दौड़ना एक बार आसान है, बट वो वेट उठाना और वो थोड़ा सा रिस्क, उसमें रिस्क फैक्टर है। तो ये चीजें आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट और एक डाइट चीज का बता जो सक है, हाँ, डाइट का काफी रोल, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट है। डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ गो हैंड इन हैंड. एंड Yes, हम ऐसे भी कुछ वॉरियर्स को जानते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद फुल मैराथन, हाफ मैराथन भाग रहे हैं. तो भाग रहे बेसिकली ऐसे अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं चलो मत, ज्यादा ये मत करो, दैट इज रॉन्ग. यू हैव हैं। टू कीप योर वेट अंडर कंट्रोल, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू मेक दैट एफर्ट. और उसके लिए आपको वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा बहुत जॉगिंग भी कर सकते हैं, रनिंग. या फिर if you're a yoga person, then do yoga, do whatever you like, but it's very important that you keep the weight under control. Be Yes. mindful about what you eat and be mindful about burning it out also. So that's Yes, very yes. जो important. पसीना है बॉडी के अंदर, वो ऑब्वियसली निकलना चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वो अगर पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। सो एक्सरसाइज और ये सारी चीजें कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, बट डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए। Sudeep is asking any comment on sleep pattern changes. Personally, I sleep well. I sleep like a baby. I sleep too much, I feel. But anyone else, would you all like to comment? स्लीप पैटर्न के ऊपर मैं कहूंगा कि आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल लगे वही पैटर्न सबसे अच्छा है पैटर्न है, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो।
जब आदमी सोता है तो वो कंफर्ट आपका पाने के लिए ही सोता है। नींद कम हुआ है क्या, या कुछ ज्यादा हुआ है क्या? कुछ कमेंट है उस पे आपका? नहीं, अभी एक इन कमेंट पे ज्यादातर क्या है, ट्रांसप्लांट राइट साइड किडनी होती है, प्रोबेबली राइट साइड किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो लेफ्ट साइड पे सोना गलत नहीं है, पर हमारा जो स्टैंडर्ड पैटर्न है खुद का, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप 8 घंटा सोते हो क्या? मीन्स आर यू एबल टू गेट, ऐसे नहीं कि कम हो गया नींद, ऐसे तो नहीं है ना? आपने ऐसे तो नहीं ऑब्जर्व किया ना? नहीं, मैं 8 घंटे तो आराम से सो लेता हूँ। शुभा? Yeah, so I never had any issues with sleep pattern, but if you have any issues with sleep, so the most commonly what I developed some hypothyroidism after transplant. So what usually we do is we have to get our TSH checked if people have hypothyroidism, and stress also would be one of the reason why you will have disturbed sleep. So you will have to look into that, the stress, why you are stressed, and work towards that. And the third thing is that even when you develop, you're in the initial stages of diabetes, so you don't know. You tend to get up every now and then in the night to go to the washroom. At least initially, it is usually people tend to normally it is around 1 or 2 times, but the initial phases of diabetes it extends to 3 to 4 times. So when you get up so many times, your sleep is disturbed. That is also one of the reason why your sleep gets disturbed. So these are the three most common. Anything else, I think you should consider if you're really having a major sleep issues, then you should really consult the doctor, because there is something called as apnea, sleep apneas, and all, which are nothing That can related. happen to anybody, not just Yeah, to nothing the... related to this transplant, but you should get it checked, because having a good sleep is very important for the body to for the body to function normally, and especially if you are a transplant patient, having at least 8 to 9 hours of sleep is very important. Thank That's you. what I would like to say. Okay, we'll take one last question. Anant has raised his hand. Anant, would you like to ask? Yeah, am I audible? Yes. All right. Yeah. So first of all, thanks for arranging this wonderful session. I think both the aspects, as ma'am said, when you talk about medical and sir is talking about sense of humor, no? But that's very important when you have this inspiring story around us. And thanks for giving this platform for us also to to getting to know what the issues are, what are the side effects, and so on and so forth. So first of all, thanks for that. I have one question as Doc is here. Protein is also is one of the common, I would say, an issues, because I have done my transplant 2 years back, 2 years, 3 months back, and I have a little bit of protein in my urine. So currently, I did my biopsy last month. I'm just waiting for the final report. The preliminary report, it looks fine, but doctor said some microscopic report has to be to be monitored. But just in general, I was reading also that this could be also one of the common issues post transplant. So any thought or any insight on this? I know it may vary person to person, but just a general question. Shubha, That he's Yeah, asking you. I am unable to answer this question. yeah, actually, it's a very niche question, a very nephrology question. So I'm a pathologist, so I think all we right. should ask your Okay. nephrologist, because it's a All very right. niche question. All right. Because Okay. proteinuria is a very common condition before transplant, during transplant, after After transplant. transplant. Yeah. Yeah, proteinuria. So you need to now wait for your biopsy report. I think that Yeah. will cover all your queries. All right. All right. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. There are no more questions. Then I will like to thank you all for your time. Kishore, over to Kishore before I close this session. Kishore, you want थैंक to यू। say anything? यस मैम, मुझे लगता है इस तरह के जो सेशंस है जो हमने बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए। जैसे ये दो लोगों की वजह से आज बाकी लोगों को काफी मोटिवेशन मिला। सो हमारे लिए तो ये दोनों है, मतलब मोटिवेशन है। ऐसे Yes. बाकी लोगों को भी इनसे काफी कुछ सीखने को मिला, कुछ टिप्स इन्होंने दी। सो आप सभी लोगों को जिन्होंने ज्वाइन किया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो Uh, गेस्ट
उनको तो किशोर जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। Yes. आप हो यहाँ पे और आपका एक गाना नहीं हुआ, वो माहौल हम कर देंगे आपको। तो एक दो लाइन अगर आप गा सकते हैं हमारे लिए, इट विल बी लाइक वीकेंड फन फॉर अस। जस्ट दो लाइन्स, so just a happy ending kind of, Before Kishore and sings, I want to thank you yeah, all sure. for joining here, and I want to thank Prasanna ji. I want to thank Shubha, my dear friend Shubha, for joining this session and sharing your life story and inspiring others, because बहुत लोग इतने क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप लोग Sure. ज्वाइन करके जो क्लैरिफाई करते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है. थैंक यू सो मच किशोर फॉर कोलैबोरेटिंग ऑन दिस. आगे जाके और भी हम लोग ऐसे कोलैबोरेट करते रहेंगे. एंड over to you. I hand over the dais to you. एक सजेशन है मेरा. हाँ जी. जया, एक हाँ जी. सजेशन है मेरा. हाँ. एक सेशन ऐसा कीजिए जिसमें स्ट्रेस रिलीविंग के बारे में बात करें हम लोग. ठीक है, श्योर करेंगे सर. यस, थैंक यू. श्रीविद्या